Hello guys, let's discuss the article which got published in Indian Express on 14th May and deals about the credit guarantees which has been announced recently by the government under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package. So this is directly related to the concepts of industrial policy and their effects on the industrial growth, which is covered in paper 3. Okay. So under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the government has decided to give a huge boost to the credit guarantees to MSMEs. So we will see what are these credit guarantees, how do they work, and how it is expected to help the MSME sector. So the government has announced these credit guarantees because the role of played by MSME sector. So MSME sector plays a very important role in the overall economy because it contributes for around 45% of the total employment opportunities, 50% of the total exports from India, and around 29% of the country's GDP. So when a question is asked in the mains, हम इस सेंटेंस को एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है. And MSME sector is a very important concept from the overall economic perspective. So GS3 में there is a very high chance that this question can be asked, that what is the problems of MSME sector or how the like credit crunch is solved by the government. So any question related to MSME sector we can write this as an introduction. So it becomes a ready-made introduction to a question. So first of all हम देखते हैं कि credit guarantees क्या होती हैं. So credit guarantees are the guarantee which is given by the government to the bank. So in a case अगर MSME sector का कोई भी company अगर loan लेता है government से and they are not able to repay it, so in that case it will be repaid by the government. अगर कोई कंपनी नहीं ब्याज चुका पाती है और उसका जो इंटरेस्ट है और जो कैपिटल है वो नहीं रीपे कर पाती है लोन, तो इन दैट केस इट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट. और जनरली इन नॉर्मल टाइम्स जो एमएसएमई सेक्टर होता है वो कुछ ना कुछ कोलेटरल यूज करते हुए बैंक से लोन लेते हैं. बट बिकॉज दीज आर द टाइम्स ऑफ क्राइसिस और एसेट क्राइसिस के टाइम पे जो है प्रॉपर्टीज की प्राइसेस जनरली फॉल डाउन हो जाती है और जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं दे आर नॉट एबल टू सीक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. एट द अदर हैंड जो बैंक्स है वो भी उनको इतना they are not willing to give or extend the loans to the MSME sector because they are high risk loans. So these credit guarantees, so the guarantee given by the government, it should help the formal banking system which include both the commercial banks and the NBFCs, so to meet the demand of the credit for the MSME sector. So जो MSME sector को जो ब्याज चाहिए या जो लोन चाहिए उसकी डिमांड को मीट करने के लिए these guarantees. Now we will see why the government needed to give the credit guarantees. So because of the lockdown due to the corona crisis, it is expected that the GDP will contract by 5 to 10%, and as a result गवर्नमेंट को लगभग 5 से 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होने की एक्सपेक्टेशंस है. So on the one hand government is going to suffer the revenue losses. On the other hand the employees and the companies, they want government to help them out financially. So there were earlier efforts by RBI to reduce the repo rate so that there can be an infusion of liquidity in the market, यानी कि मार्केट में जो है वो liquidity infuse की जा सके, but they have not started because the banks are not willing to extend new loans. banks जो है वो नया लोन नहीं देना चाहते हैं और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि they are fearing that it will increase in their non-performing assets. So the Indian banks, they are already suffering due to the non-performing assets, and if they extend these loans which will be high risk loans, so they don't simply want to extend the loans. And on the other hand the government is facing this problem that on the one hand the banks are having the money, बैंकों के पास पैसा है but they are not willing to lend, वो उधार नहीं देना चाहते हैं to the credit starved sections of the economy. While on the other hand government is not having the money, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है but उनको इकोनॉमी को जो है हेल्प भी करना है. तो to meet both these challenges the government has come up with the credit guarantee. So it is expected that it will solve the problem. Now what is the quantum of the credit guarantee provided by to the MSME sector? So government ने कितना announce किया है? So out of the total 20 lakh crore, the government has said that they will give a credit guarantee of 3 lakh crore to the MSME sector. So there are total 3 proposals. So this is first one is for the standard MSMEs. So ये standard MSMEs क्या हैं? ये ऐसे units हैं, they have an outstanding loan of 25 crore at present and their turnover is less than 100 crore. So अगर इनमें से कोई भी एक condition meet हो रही है, either they have ऑलरेडी अगर उनके पास 25 करोड़ का लोन है, उन्होंने ले रखा है बैंक से, या फिर जो उनका ओवरऑल टर्नओवर है दैट इज
लेस देन 100 करोड़, तो ऐसे जो भी एमएसएमई सेक्टर है दे कैन सीक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, वो नए लोन ले सकते हैं। और इन दैट केस इट विल बी, इफ दे फॉल्टर, अगर वो नहीं रीपे कर पाते हैं, सो द गवर्नमेंट विल बी पेइंग बैक 100%। ओके, सो ये ऐसे सेक्टर्स हैं दे वर परफॉर्मिंग वेल बिफोर द कोविड-19 क्राइसिस। जो यूनिट्स अच्छे तरीके से दे रन कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना क्राइसिस दे आर नॉट एबल टू मीट देयर क्रेडिट डिमांड, दिस लोन विल बी एक्सटेंडेड फॉर देम, एंड फॉर द डेडलाइन फॉर दिस लोन इज 31 अक्टूबर 2020। सो जो भी ऐसे स्टैंडर्ड एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको 21 अक्टूबर 2020 तक, सॉरी 31 अक्टूबर 2020 तक वो जो भी लोन लेंगे, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 100% गारंटी टू दैट। जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज सबऑर्डिनेट डेट स्कीम। ओके, सो दिस इज ऑफ वर्थ ऑफ 20,000 करोड़, और जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड जो एमएसएमईज हैं, यानी कि जो जो कोरोना क्राइसिस है उसके पहले जो स्ट्रेस्ड थे, या जो खुद जो अपना लोन है वो रीपे करने में संघर्ष कर रहे थे, दे वर स्ट्रगलिंग टू पे बैक, ऐसे जो एमएसएमईज हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो 20,000 करोड़ रुपीज तक के लोन्स, overall 20,000 crore rupees तक के लोन प्रोवाइड करेगी। एंड इन दिस केस द गारंटी इज नॉट फुल बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड partial guarantee, while on the other hand in the first one, the standard MSMEs, government thinks that they will be able to repay their loans because they were functioning very well before the crisis। जो थर्ड कैटेगरी है that is a corpus fund, यानी कि गवर्नमेंट इज trying to create a fund of rupees worth 50,000 crore, 50,000 करोड़ का फंड गवर्नमेंट इज trying to create, that will invest in the viable MSMEs। so जो भी viable MSMEs हैं जो well functioning है, उन MSMEs में government will invest and it will expand them, it will help them to expand and grow। so जो भी MSME units हैं they were functioning economically viable, the government will infuse money into them from this fund, and out of this 50,000 crore government is thinking to invest 10,000 crore, and जो LIC या जो बाकी SBI जो other institutions है, इट इज एक्सपेक्टेड या गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि बाकी जो 40,000 करोड़ है इट विल बी कमिंग फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज द चेंज इन द डेफिनेशन। सो अर्लियर वी नो कि जो एमएसएमई सेक्टर डिफाइन करने की जो डेफिनेशन है दैट वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू द टर्नओवर बेसिस। सो जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन होता है वेदर दे आर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, सो इट विल बी बेस्ड ऑन द टर्नओवर। Now let's see कि जो गवर्नमेंट ने 4 measures लिए हैं how they are going to help the MSME units। So the credit guarantee scheme worth 3 lakh crore, it is going to help in paying the MSMEs the salaries and meeting their other expenses। तो जो भी उनके कैपिटल एक्सपेंसेस या जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने में हेल्प करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम इज गोइंग टू हेल्प अराउंड 45 lakh MSMEs, and these 45 lakh MSME unit they employs around 40% of the overall employees, so this is going to be a very good step for the MSME sector। other than that जो definition में change किया है उसकी वजह से many of the units particularly in the service sector earlier they were not eligible to get the loans because of the definition। now because the loan will be extended based on the turnover, so many of the extra units like mid-sized hospitals, hotels, diagnostic centers, they will be eligible to get the loan, so it is going to be helpful for this particular sector। उसके अलावा जो बाकी 2 steps हैं it is said that इनसे जो है ज़्यादा help नहीं मिलने वाली है। Now what are the downsides of resorting to the credit guarantee, यानी कि इसकी कोई limitation है क्या credit guarantee की? So the biggest limitation is the moral hazard। What is moral hazard? Let's understand। Because the government is giving the 100% credit guarantee, it means कि अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी MSME यूनिट है, if they take a loan suppose 20,000 crore and they are not able to repay it, or suppose 1,000 crore, so if they are not able to repay it, so in that case the government will have to pay overall 1,000 crore rupees to that particular unit। so in that case जो लोन लेने वाला है उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं रह जाएगा पे बैक करने का, और इवन जो बैंक्स हैं they will also not have anything to worry because
they are sure that their amount is going to come back. उनको ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि उनका जो है लोन डिफॉल्ट हो जाएगा. So उस केस में they will not take much efforts to check whether the borrower is deserving or not, कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उसको लोन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए. So this is a moral hazard involved in this case. इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये हो सकता था कि rather than giving a 100% credit guarantee, government should have given a split guarantee, यानी कि से around 80% 20%. So in that case अगर कोई भी यूनिट लोन रीपे नहीं कर पाता है, so the 80% will be given by the government and the 20% will be borne by the particular that unit. So in that case it would have been a better option and the problem of moral hazard would have been tackled in that manner. So this is the overall discussion about the credit guarantees and the other proposals which has been given or which has been announced by the government to help the MSME sector. And as we discussed in the beginning of the video, that MSME sector is the engine of growth. So if the MSME sector performs well, the entire economy performs well, particularly the manufacturing section. So I hope that you people have liked this video, and I request you to please like this video, share it with your friends who are preparing for either UPSC or other state PCS exams, and I also request you to subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.